So very good afternoon to all and welcome all to today's session. I'm sure my voice is audible and screen is visible. अगर मेरी वॉइस अब तक पहुंच रही है एंड स्क्रीन विजिबल है सो जस्ट टाइप यस ऑन द चैट बॉक्स. So those who are attending this session from our YouTube channel, just type yes that my voice is audible and screen is visible. So we'll just wait for 30 seconds or so and for the confirmation. Then आप हम लोग को बता सकते हैं कि अगर मेरी वॉइस ऑडिबल है एंड स्क्रीन विजिबल है. सो दोज हु आर अटेंडिंग दिस सेशन फ्रॉम आवर वेबएक्स, वहाँ पे एक चैट सेक्शन एक बटन है, वहाँ पे जाके आप टाइप कर सकते हैं. एंड दोज हु आर अटेंडिंग दिस फ्रॉम यूट्यूब चैनल, सो लाइव चैट बॉक्स एक लाइव चैट एक सेक्शन है, वहाँ पे जाके यू कैन जस्ट टाइप यस दैट मेरी वॉइस एंड स्क्रीन विजिबल है. So I'm sure my voice is audible. Now let's start the session. So talking about the Nifty 50, today is the Nifty 50 weekly expiry, and today I'm having with me Mr. Karan Pai, who is our research analyst and who will be talking about the Nifty 50 top sectors. Why is the market down today? आज market क्यों नीचे गिरा है? क्या means outlook है market का? Support resistance क्या है? And मीन्स कौन कौन से सेक्टर्स आज रेड पे हैं, कौन से स्टॉक सबसे ज्यादा रेड पे हैं, क्या एक सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग देख सकते हैं आने वाले कमिंग वीक पे. नाउ ये सबसे पहली जो रिपोर्ट है दैट इज आई वांट टू डिस्कस विद यू ऑल, दैट इज मींस निफ्टी 50 के ऊपर है. So this report is published every means weekly, that is on Thursday, which is shared by our research analyst team. Now talking about this report, यहाँ पे Nifty 50 का cash futures and futures OI data दे रखा है. So we have seen the decrease in the open interest of 3.3% with a decrease in the price of 0.3%, that is indicating long unwinding. Now talking about this current week expiry OI data, that is कॉल साइड पे सबसे ज्यादा इमीडिएट रेसिस्टेंस है, दैट इज ऑन 23,500, 23,700 एंड 23,800. वैसे ही पुट साइड में सबसे ज्यादा सपोर्ट है, दैट इज ऑन 23,300, 23,400 एंड 23,500. सो ये हुआ निफ्टी 50 का आउटलुक एंड निफ्टी 50 का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट. ये मॉर्निंग का डेटा है, सो दैट्स व्हाई आई एम शोइंग यू दिस डेटा जो आज रिसर्च एनालिस्ट ने हमारे पब्लिश किया हुआ है. तो यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी का भी रिपोर्ट मिल जाता है एंड simultaneously you get the Nifty 50 volatility chart with followed by the Bank Nifty. Now talking about the strategy, that is for the 28th November expiry, क्योंकि next week that is a monthly expiry of the stocks and the index. So जैसे कि most of you will be aware कि that अभी बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी बंद हो गया है, फिर निफ्टी का भी बंद हो गया है. Now strategy for this next week, that is on the Nifty 50, we have recommended as a buy on the 23,500 call with a range of 205 to 215 and the sell that is 23,750 call 105 115. तो यहाँ पे ब्रेक इवन रहेगा, that is 23,598 का. रिस्क इन वैल्यू that is minus 2,450 and reward in value that is a minus 3,800. So this is for the one lot. So majorly like spread strategy में क्या होता है, you simultaneously do the call buy also and call sell also. So call buy and call sell, agar simply you do the call buy, then simply you have to pay the premium and you can take the call means for the next day, और जब भी आपको प्रॉफिट दिखे तो एक प्रीमियम को वैल्यू means पे करना पड़ता है. Now if you are doing the spread strategy, तो spread strategy में you do the call buy also and call sell also, जहाँ पे minimum margin requirement रहता है, that is 25 से 30,000 में means your work is done actually. But if you are doing the naked sell, that is means call sell simply or the put sell, then the margin requirement is approximately between like 80 to 1.2 lakhs. So that is the means benefit of the spread specifically, कि जहाँ से you are safeguarding your position, that is you are doing the call buy also and simultaneously you doing the
call sell also. So ये जो strategy है that is means for the next week, that is 28th November की expiry है. This report I'll show you in the this charts or in the means I'll put in the this live chat section also, so that means you can go through it, and also those who are attending this session from our webex, तो ये आपको reports mail पे आ जाएगी. Now I will hand over my session to Mr. Karan Pai, who will going to take you forward about the Nifty 50 market outlook. क्यों आज market गिरा है, क्या major reasons हैं, कौन कौन से sectors down हैं, and what are the stocks which are right now into the uptrend or the downtrend or the sideways trend. So with this, I'll hand over the session to Mr. Karan Pai. Karan, all over to you. Thank you, Rohit. Thank you for that wonderful introduction. But unfortunately, आज के दिन भी we have another red on the screens, and एक sort of sentiment positive हो रहा था on Tuesday, and I'll just show it to you on charts. It is better I show it to you. Just give me a second. I'll share my screen. Yeah. So now that my screen is visible, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाता हूँ एज आई जूम इनटू द चार्ट्स. सो आई विल रिमूव ऑल द इंडिकेटर्स. या मुझे आपका अटेंशन ड्रॉ करना है टुवर्ड्स द प्रीवियस सेशन कैंडल. सो ये कैंडल हम लोग इसे टेक्निकल्स में भी कॉल इट समथिंग कॉल्ड एज अ डोजी कैंडल. एंड ये पर्टिकुलर कैंडल का देयर इज अ सिग्निफिकेंस. इसका क्या सिग्निफिकेंस है, अगर कोई मुझे चैट में बोल पाएगा दैट विल बी रियली हेल्पफुल. एक पर्टिकुलर कैंडल पैटर्न है, इट टेल्स यू अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ व्हाट मार्केट इज डूइंग. एंड इसका मैं आपको जस्टिफिकेशन देता हूँ एज टू व्हाई दिस हैपेंड. सो ट्यूसडे को जब मार्केट ओपन हुआ था, एक काफी पॉजिटिव नोट पर ओपन हुआ था, एंड ड्यूरिंग द डे अगर आप देखो तो इसने हाई मारा था ऑफ अबाउट 23,800. सो सेंटिमेंट्स वर ब्रॉडली पॉजिटिव. But after about 1 or 2, we saw something happen globally. So globally ये हुआ कि रशिया यूक्रेन का जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है that intensified, and then there were also news articles about Russia preparing for a nuclear war and all those things. So basically geopolitical tensions आया, and then the sellers came in. And they came in strong. They came in really strong. So if you look at where we opened on Tuesday, we opened at about 23,530, and just by looking at the candle आपको पता है कि this was a strong open because previous close से काफी positive open हुआ था. And then वहां से हम लोगों ने हाई देखा था of 23,780. 780 से जो मारा उसे, I mean जो एक सेल ऑफ आया वहां पर इंट्राडे में. नाउ दिस इज टिल यहाँ तक का जो कैंडल है दिस वाज टिल 330. सो आप देख सकते हो 115 से लेके 330 में वी शेड अ लॉट ऑफ द मॉर्निंग गेन्स. करेक्ट. सो बेसिकली ऐसे हुआ कि मार्केट ओपन हायर, अटेम्प्टेड टू गो हायर, इवन हायर, एंड तकरीबन 23,800 के पास देयर वाज अ रेजिस्टेंस एंड स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया, एंड वी ब्रोक बिलो द ओपन ऑल्सो. सो ऑल इन ऑल एक नेगेटिव नोट पर मार्केट क्लोज हुआ था, बिकॉज जो कैंडल की मैं बात कर रहा था दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ सेलिंग टेल. सेलिंग टेल अभी से क्यों बोलेंगे, बिकॉज इनिशियली द बुल्स वर इन कंट्रोल, बट देन द बेयर्स केम एंड देन दे स्टेड इन द मार्केट. And of course, कल as you all know, when the Indian markets were shut, US काफी positive respond कर रहा था. We had NVIDIA results, we had a few of the Fed members stock, and geopolitical tensions था. So though it was a bit jittery, but all in all something like S&P 500 अगर आप उसका भी अगर चार्ट देखोगे तो despite moving lower, जो क्लोज है वो थोड़े न्यूट्रल स्टांस पर हुआ है. न्यूट्रल नहीं बोलूंगा, स्लाइटली पॉजिटिव है, बट इफ यू सी द एक्चुअल गेन इट इज एक्चुअली 0.15 पॉइंट्स का पॉजिटिव क्लोज रहा है. सो यूएस मार्केट्स एक थोड़े पॉजिटिव नोट पर क्लोज हुआ था, बट देन दिस मॉर्निंग वी ओपनड ऑन अ क्वाइट नेगेटिव नोट. And as most of you might be aware that there were a few allegations on the Adani Group chairman of of bribery schemes and all those things. So all in all market ने एक negative tone पकड़ा, and then जो एक sell off हम लोग को because of geopolitical tensions Tuesday को दिखा था वो आज intensify हुआ, and we had a negative open, एक kind of 30 point ही down था, but nonetheless it was a bit of negative open, and वहाँ से sell off start हुआ, and we tested a low of about 23,260, 23,300 के पास है, again a bit of psychological level. But
एक fact that I read this morning in one of the Reuters report was that combined जो जितने भी अदानी के stocks है, they have lost about 22 billion dollars in value. So अगर आप देखोगे आज के दिन में भी अदानी stocks जो है, red बोलना थोड़ा difficult. I would say it is deep red because in the morning I remember a few of the Adani stocks were hitting circuits. And I mean the lower circuits, not the other one, but lower circuits पर चल रहे थे. अभी के भी अगर आप losers देखोगे उसमें टॉप में आपको अदानी के ही दो stocks दिखेंगे, which we will discuss in some time. Now, stating a few facts as to what is happening. निफ्टी ने जब से 23,800 का जो लो एक काइंड ऑफ लाइक एक बेस बन रहा था अराउंड दिस पॉइंट, एक गैप से उसने निकाल दिया एंड देन येस्टरडे देयर वाज अ रीटेस्ट ऑफ दैट लेवल. सो इन द सेशंस टू कम 23,800 जो है वो काफी क्रूशल साबित होगा. नाउ वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, ये 2 दिन में वोलेटिलिटी ज्यादा हुई है, सो डेफिनेटली जब मैं लेवल्स की बात करूंगा दे आर गोइंग टू बी अ बिट ऑन दी अप्स, मतलब डिस्टेंस जो रहेगा फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस विल बी अ बिट ऑन द हायर साइड. सो इसीलिए अभी वी आर ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 23,350, सो आई एम टॉकिंग ऑफ 23,800. आई नो थियोरेटिकली ये थोड़ा लंबा दिख रहा है, बट fact is the fact, and the resistance that I'm looking for probably would be somewhere around 23,800. Mild leeway में देना चाहूंगा तो 23,900. So I would look at a zone of 23,800, 23,900 on the upside. नीचे की अगर मैं बात करूं, we had another phenomena that was under something that was happening. सो जून 4 आपको याद होगा सेंटर का इलेक्शन चल रहा था एंड उस दिन एक काफी बड़ी फॉल आई थी. सो उसके पहले देयर वाज एन अटेम्प्ट, आई मीन द इंडेक्स मेड एन अटेम्प्ट टू ब्रेक आउट ऑफ अ कंसोलिडेशन. उसका जो हाई था दैट एंड जो मंडे का लो था दैट वर एग्जैक्टली द सेम. सो वहां से मार्केट एक्चुअली ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, इज व्हाट द चार्ट्स आर टेलिंग. देन रशिया यूक्रेन जियोपॉलिटिकल एस्केलेशंस हैपेंड, वहां से एक थोड़ा डाउनफॉल आया एंड देन टुडे बैड न्यूज सराउंडिंग अदानी हैपेंड एंड देन जो एक नेगेटिव ओपन था दैट एक्चुअली एक्सेलरेटेड टू अ प्रॉपर बेरिश मोमेंटम. So that is what is happening. So takeaway here is at the moment 23,300 का जो crucial level है वहां पर हम लोग खड़े हैं. अपसाइड हम लोगों ने डिटरमाइन कर लिया 23,800, 23,900 का है. Now downside is immediately it would be somewhere around 23,100. वो भी अगर लेवल निकाल रहा है then we might look at levels that are a bit more deeper, probably towards 23,000, 23,000 22,800. Okay, now based on horizontal supports resistance, we have taken out the probable levels that we are looking at. Now I'm going to look at Fibonacci. Fibonacci is something that we have not covered yet, but yeah, something that is in the pipeline जो cover होगा. So Fibonacci आपको बेसिकली ये बोलता है between 2 points अगर एक रैली रही है, जैसे ये चार्ट में मुझे दिख रहा है कि just give me a second. Yeah, जैसे ये चार्ट में मुझे दिख रहा है कि there was a strong rally that started off from 4th of June. 4th of June का अगर आप लो देखोगे वहां से एक जो बाइंग टेल काइंड ऑफ पैटर्न आया था that continued all the way to 27th of September. करेक्ट. ये पूरे मूव का अगर मैं देखूं कि ये पूरे मूव का जो लेंथ रहा है, करेक्ट, उसके क्या परसेंटेज पे वी आर करेंटली स्टैंडिंग, दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग एट व्हेन आई एम लुकिंग एट अ फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल. So 50% that actually coincided with 23,800, which was also something probably that the market was looking, because आप अगर देखोगे यहाँ ये जोन का जो लो आ रहा था, जो लोअर एंड था, that was also falling somewhere around 23,900. So whenever you're looking at supports and resistances, we have mentioned earlier that you have to look at a range. You cannot exactly pinpoint this is going to be the support, this is going to be the resistance. You look at a range. करेक्ट. सो रेंज यहाँ पर अगर मैं देखूं तो 23,900, 23,800 का बन रहा था. दैट वाज आल्सो कोइंसाइडिंग विद द 50% रिट्रेसमेंट लेवल एंड वी आल्सो हैड द 200-day EMA that was placed at 23,500. And the unfortunate thing is at the moment we are placed below all those levels. Then what we have to do is look at the next possible support level. अभी यहाँ पर हम लोगों ने डिटरमाइन किया था 23,100 के पास जो है कहीं पर सपोर्ट आएगा. 23,100, 23,000. 23,000 could be a big figure, I mean a psychological level, because it's a big figure. So
वो zone में is where I would try to look for supports here, because it also coincides with 61.8%. Now these things, I mean, whenever you are analyzing the market, there are a few things that are not known to a regular trader, जैसे जो आज का जो न्यूज़ था या रशिया यूक्रेन का जो भी था. So ऐसे टाइम पर you have to be very flexible. You have to make sure that if you have a profit, then book your profit, and if you have a position, keep your stop losses in place, because these the two events that we have seen over the past 2 days, they have been quite market moving, and market का trend काफी, I would say, impact कर रहा है वो, because Tuesday was some जब हम लोग लंच करने गए थे, we were looking at a very big green candle, and when while we were having lunch, Russia Ukraine, that sort of escalation happened, and we closed on a bit of a negative note. So I wouldn't say a bit of a negative note, it was quite a negative note. And then this morning, we woke up to allegations on Adani Group chairman, and then there was continuity. So that is why you should always have your risk management in place. Risk management, जब मैं बोल रहा हूँ, please keep your stop loss levels in place, because there are some things that you cannot discount when you're trading. You can only do so much, and as a trader आप chart देख सकते हो, you can look at the UI data and determine levels, but जब ये सारी चीजें होती है, they are absolutely out of control. So now we'll just take a look at the OI data and see what the market is discounting for, I mean, what the traders are looking at for the coming expiry. So I'll just go on to NSE India, type in Nifty and click on option chain. Current expiry का पहले हम लोग देखते हैं, then we'll look at what the next expiry is looking like. So current expiry में अगर मैं OI accumulation देखूं, I am able to see somewhere around 23,500, जहां पर काफी अच्छी accumulation हुई है. 23,500 bear in mind was today's high also. Then on the put side, 23,300 is where we are seeing a lot of OI accumulation. And अगर उसके नीचे के levels अगर आप देखोगे, 23,250, 23,200 के, there is a combined open interest of about 9 lakhs. So somewhere in between 23,200, 23,300 is where we might see massive supports coming in. And if you even dig deeper, 23,000 for the day, 300 points from here, unless and until there is some new reports that are that are published about any sort of other happenings, or there is some geopolitical tension, fresh geopolitical tensions, 300 points from here at the moment seems unlikely. But again, a caveat है, going by what has happened over the past 2 days, things can go south really fast, and in a matter of minutes. So broadly, we could look at levels of 23,100, 23,200 on the downside, and ऊपर के तरफ 23,500 for the day seems a lot more likely. यहाँ तक किसी को कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है, प्लीज पुट इन द चैट बॉक्स. We'll just hold for a second, we'll just hold for a minute or so. So if you have any queries, anything, then you can directly put in the chat box. And जो YouTube channel से attend करे, they can click on the live chat section and they can post their comments. So YouTube में we are having the query that means there are the people like who wants to learn about the options trading actually. So just wanted to inform you कि that हम लोग ने already sessions काफी सारे cover किए हैं पहले, कि ऑप्शंस होता क्या है, ऑप्शंस का कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, ऑप्शंस कैसे मींस आईटीएम क्या होता है, एटीएम कैसे होता है, और आउट ऑफ द मनी कॉल्स क्या होता है, एंड उसको और सिंपली वे में समझाया है कि दैट ऑप्शंस में आपको ट्रेड कैसे करना है. सो इफ यू आर अटेंडिंग दिस चैनल, इफ यू आर अटेंडिंग दिस सेशन राइट नाउ, आई वुड सजेस्ट यू कि जब आप अभी यूट्यूब में हैं तो यहाँ पे एक्सेस सिक्योरिटीज लिखा रहेगा, वहाँ पे एक्सेस सिक्योरिटीज में यू हैव टू जस्ट क्लिक इट and you will be redirected to the this page of the access securities. Now access securities में जाके you have to click on the live section, जहाँ पे home रहेगा, videos रहेगा, shorts रहेगा and live रहेगा. वहाँ पे सारे हम लोगों ने जो भी अपना सेशंस किया है ऑप्शंस के ऊपर, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, आई मीन ट्रेंड्स कैसे फॉर्म होते हैं, वो सारे सेशंस ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं. कल जो हम लोग का सेशन है दैट इज ऑन द सेशन 8 ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, जहां पे वी विल बी टेकिंग ऑफ द 2 to 3 स्ट्रेटेजीज के ऑप्शंस में ट्रेड कैसे करना है, मींस इफ यू आर पुटिंग एनी काइंड ऑफ लाइक द स्ट्रेटेजी. सो वहां पे
in the live chats, in the live section में you can just search it about the session 1 option trading. So वहाँ पे you will get entirely, or you can scroll down also and you can get entire options related sessions. If you want to learn about the commodities also, so we have already done the 3 sessions on the commodities, कि बेसिक्स ऑफ कमोडिटीज क्या होता है, प्रीशियस मेटल्स क्या होता है, एंड एनर्जी क्या होता है. तो एनर्जी हम लोग का परसों ही सेशन हुआ था, so you can attend that session also. Now on this coming week, that is on the next Tuesday, we will be having the session on the commodities again. So commodities का वो session रहेगा, that will be on the session 4. So live chat, live section में जाके you can just go and explore all our this trading sessions. So I hope we have answered your query on this. So I would suggest you see basically market कल बंद नहीं होने वाला है. So market will be on every day. Okay. So you have to understand कि क्या क्या risk management रहते हैं if you are going to if you are going to trade into the options. So before burning your money into the options, I would suggest that you have to just go and means learn about the options first of all, कि options क्या होता है, options में call put क्या होता है, call का मतलब क्या होता है, buyer कौन होते हैं, seller कौन होते हैं, उसका क्या मीनिंग रहता है, एंड बेसिकली कैसे ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, कैसे रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं. सो ये सारे सेशंस हम लोग एवरी फ्राइडे को करते हैं. कंसेप्ट आई वुड से दैट इज हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट क्लियरिंग करते हैं एवरी फ्राइडे एट 2:30 PM. सो वैसे ही एक नेक्स्ट सेशन है दैट इज 2:30 PM पे कल. सो इफ यू आर attending this session first time, I would again suggest you, मैं again repeat कर रहा हूँ, that access securities पे you have to click it and you have to go and explore the live section. So videos रहेगा, shorts रहेगा, live रहेगा, live पे click करना है and live पे जाके just you have to scroll down and वहाँ पे सारे हम लोगों ने sessions कर रखे हैं options के ऊपर. तो session 1, session 2, session 3, कल session 8 है. So कल session 8 के लिए you can like and subscribe the channel so that you can get the notification from the YouTube itself, or means also from our side, so that you don't miss out that tomorrow session also. So I hope I have answered your in this session from my YouTube channel. Now over to you, Karan. So thank you, Rohit, for that. And because nobody has asked a question, so we will assume that यहाँ तक चीज़ें सबको clear है, and we'll quickly move on to what are the 12 sectors that we look at are doing at this moment. So broadly अगर आप देखोगे, somewhere around 9 the negative territory. Somewhere around 9 sectors at the moment are trading in the negative territory, and अगर मैं जो सबसे बड़े laggards है, that at the moment are something like PSU banks which are down about 3%. Energy stocks जो है 2.1% negative में चल रहे हैं. Media stocks are trading negative. Metals also have turned negative. And gainers अगर आप देखोगे तो we have realty, IT and private banks that are actually trading in the positive territory at the moment. Other than that, we look at what the individual stocks are doing. And I'll quickly go to market data, NSE, equity, and yeah. So market breadth अगर आप देख सकते हो 36 stocks out of 50 they are in the negative territory, declines category में आ रहे हैं, and then 14 are positive. So that is clearly showing that sentiment जो है वो थोड़ा आज probably towards the negative side है. I mean the market is clearly showing that it's negative, but yeah, breadth भी एक negative side पर है. अदानी स्टॉक्स में फिलहाल तो थोड़ी रिकवरी है. A few minutes back when I was preparing our mid market report, I saw that something like Adani Enterprises was down more than 21%. फिलहाल it is showing about 20%. Adani Ports में भी काफी गिरावट है, and about 18% in the red is where it is trading. And then we have something like SBI Life, which are trading about more than 2% in the negative territory. पॉजिटिव्स की अगर हम लोग बात करें तो आज के दिन में यू हैव पावर ग्रिड, हिंडाल्को, एक्सिस बैंक विच आर एक्चुअली आउट परफॉर्मिंग. So that's what the market breadth is at the moment. Those are the top performing sectors, the worst performing the top performing sectors and the worst performing sectors. The top stocks that are in the green, all of the Nifty 50 basket की अगर हम लोग बात करें, the top performing stocks, the worst performing stocks. So that would be all from our side for the day, and we'll open up the floor for Q&A. We'll be available for another 2 minutes max.
एंड अगर किसी को कुछ क्वेरी नहीं है, कुछ पूछना बोलना नहीं है, देन वी विल एंड दिस डिस्कशन हियर. आई एम स्टॉपिंग माय स्क्रीन शेयर. So Karan, we are having the question from our WebEx channel कि आज इंट्राडे लेवल्स पे हम लोग क्या देख पाएंगे ओके. निफ्टी 50 का खासकर. या सो दिस इज द 1 आवर चार्ट. एंड अगर आप देख सकते हो रोहित, एक काफी बड़े बेरिश कैंडल के बाद एट द मोमेंट वी आर एक्चुअली स्लाइटली साइडवेज. फिर भी अगर लेवल्स की बात करें तो somewhere around 23,300 on the downside is what I would consider as a bit of support area. And जो आज का high था, that also actually coincides with the previous session low. This is something that I just observed. So 23,500, 23,550 is where we might see the resistance on the upside. So ये levels होंगे, but going by what the price action is suggesting, there is a slight upward drift. एक strong momentum build-up यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है at the moment. So what I would suggest is wait for recommendations from a research analyst, and they'll be able to give you a better idea. एक बार हम लोग मोमेंटम की तरफ भी नजर डाल देते हैं. So what you're seeing right now is the RSI. Just give me a second. या ये 14 पीरियड RSI अगर आप देखोगे क्वाइट, अगर आपको याद होगा तो मैंने रेंज शिफ्ट की एक बार बात की थी, एंड इट वाज ट्रेडिंग बिटवीन 50 एंड 30, एंड एट द मोमेंट वी आर प्लेस्ड अ नॉच बिलो 30. सो कहीं ना कहीं दो ये ओवरसोल्ड बता रहा है, बट कॉन्ट्रा खेलना एट द मोमेंट is not something that I personally would do unless and until we see something strong that is happening and is actually suggesting a trend change. Also one more interesting thing is जो पहले हम लोग सपोर्ट की तरफ देख रहे थे ना रोहित, 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अब वो रेजिस्टेंस बन के थोड़ा एक्ट करेगा. सो दैट ऑल्सो कोइंसाइड्स विद 23,500. So all the factors, they are just emphasizing on the importance of that 23,500 level. So thank you so much, Karan, for giving the intraday levels and the positional levels that helps the all our participants to take the informed decisions into the market. So if you have any queries, anything, then we will just wait for a 30 seconds or so, or else we can then wind up the session. Also, do not miss to attend the upcoming session, that is tomorrow at 2:30 p.m. That's on the options trading strategies. So I think now we can end the session here, and as no one is having the query on this, so thank you so much all the participants who are attending this session today. And means there was a question that कि कौन कैसे जाके previous sessions देखें. So you can just click on the Access Securities या YouTube में जाके just search on the Access Securities. Click on the Access Securities and वहाँ पे home रहेगा, videos रहेगा, shorts रहेगा, live रहेगा. Click on the live sessions. Now under the live session there are all the options, technical analysis, commodity, जितने भी सेशंस हमने आज तक किए हैं वो सारे सेशंस ऑलरेडी लिस्टेड है वहाँ पे. ऑलरेडी दिस रिकॉर्डिंग्स आर अवेलेबल. If you have any queries, anything, then you can mention in the comment box also. So with this, I Rohit Mishra signing off, and thank you so much, Karan, for your valuable insight. Thank you all. Thank you for joining us, guys. Thank you.